अभी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें सिंपल एक रॉक पेपर सीजर गेम बनाएंगे, जिसमें एक रॉक पेपर सीजर होगा कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान। एक कंप्यूटर होगा और एक यूज़र होगा, वो दोनों चूज़ करेंगे रॉक पेपर और सीजर में से, और रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास। इसका नाम एक रैंडम का फंक्शन इंपोर्ट कर देते हैं। इसमें 3 चॉइसेस होंगी, उनको हम सेव कर देते हैं वेरिएबल में। वो 3 चॉइसेस आ गई हैं और हम यूज़र को बोलते हैं में से कोई चॉइस सेलेक्ट करे। यूज़र जो भी एंटर करे उसको लोअर में लेटर में कन्वर्ट कर देंगे, और कैपिटल में एंटर करता है तो यूज़र रॉक एंटर करता है। अब कंप्यूटर चॉइस होगी। कंप्यूटर कोई भी रैंडम चूज कर लेगा। चॉइसेस में से अब जितने उनमें से चूज किया तो फिर वो उसको दे दे। अगर यूज़र की चॉइस इक्वल इक्वल है कंप्यूटर की चॉइस के साथ, मैच प्रॉपर हो जाएगा।
लास्ट में वो हमें बता दे। रन करके देखते हैं इसको। टाई हो गया।